was about for other responsibilities. Dash, fine. Next question है how much the caring involves. How much, maybe money something. Third question है helping her have a dash, then dealing with something, then any aspects of caring that are especially difficult, example loss of something, dash her and preventing. Then transport costs, example cost of bus maybe, car related costs, example fuels and dash, and lastly help to reduce. Let's listen from It's here. really good to see you, Tom. Since I had to give up work, I feel I'm losing touch with my friends and colleagues. We really miss you in the office. We were all so sorry you had to leave. But you must be relieved to have more time to look after your mother. How is she? Well, she's very cheerful, but she needs a lot of help. Have you tried to get any support from the local council? No, I didn't know I could. Yes, they offer different kinds of practical support. They realise that carers sometimes need time for all the other responsibilities they have, apart from the person they're caring for, and also that they sometimes need a break. Absolutely. ओवरऑल आई थिंक डायलॉग है जहां दो लोग बात कर रहे हैं दैट एल्डरली पीपल के लिए दे वांट सम वांट टू केयर, क्योंकि दिस कैन गिव द केयर। जो बंदा ऑलरेडी किसी की केयर कर रहा है उसको क्या मिलेगा इस चीज से? पहले तो उसको दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए टाइम मिल जाएगा, एंड सेकेंडली उसको एक ब्रेक मिल जाएगी, अ ब्रेक। फाइन। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ मदर्स नीड्स, उसमें इंक्लूड है, दिस में इंक्लूड डिस्कशन ऑफ हाउ मच, let's see the caring involves, how much cost maybe or whatsoever. Okay, so tell me more. How do I go about getting this support? Well, you'd have to have an assessment of your mother's needs. That means someone would come round and talk to you about the situation and what you need. So, for a start, they'd want to know the amount of time you spend looking after your mother every day. Okay. The amount of time is directly referring to how much, कितना ज्यादा वक्त, it's time. Yes. Okay. Next, what types of tasks are involved? ड्रेसिंग में हेल्प करेंगे, और लास्टली हेल्पिंग हर हैव अ maybe shower or maybe bath or maybe. Then they'll probably ask you what sorts of tasks you do for your mother during the day. Things like if she needs help with getting dressed, for example. Right. I help her with that. And also I help her get into the shower in the morning. Yes. See, also helping her to have a shower, ऑडियो में उसने बोला to get a, और इनका एक ही मतलब होता है, this all means the same. And last, dealing with something, और इसका आंसर हमें मिलेगा after helping with meals. That sort of thing. They'll probably ask you if you do the shopping for her and help her at meal times, and whether she can cope using money. Yes, that's becoming a bit of a problem. She used to be very good at... Dealing with money, dealing की जगह उसने क्या synonym यूज किया? Cope. Cope is a synonym of, मेरा ये मिस हो गया था, मुझे और समझ नहीं आया, बट मुझे शॉर्ट टर्म मेमोरी में अभी याद था कि उसने बोला है कोपिंग विद मनी, तो मेरे क्वेश्चन में डीलिंग लिखा है विच इज अ सिनोनिम ऑफ कोपिंग, और आगे उसने जो भी बोला वो मेरा आंसर होगा. दैट्स ऑल्सो हाउ यू अटेम्प्ट योर लिसनिंग. एनी एस्पेक्ट्स ऑफ केयरिंग दैट आर स्पेशली डिफिकल्ट. केयरिंग के कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स और फीचर्स जो थोड़े डिफिकल्ट होंगे, जिसमें आ जाता है लॉस it, but not anymore. Before you hear the rest of the conversation, you Anything you find particularly difficult about caring for your mother? So recently I've noticed she's started to have quite bad problems with her memory. If I wasn't... सबसे पहले क्या डिफिकल्टी? शी इज हैविंग डिफिकल्टीज विद हर मेमोरी. अभी वैसे उसने लॉस बोला नहीं है,
ठीक है, लेकिन डिफिकल्टी की पहली यही बात हुई है. There, I think she'd forget to eat, for example. And often she doesn't seem quite sure what day it is. Yes, tell them about that. And are there any physical difficulties you have caring for her? Lifting her, for example. Yes, she's quite heavy. ओके, अगली डिफिकल्टी. हर ऑलरेडी गिवन, और ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि अच्छा, लिफ्टिंग हर, उसको नहीं उठा सकते, कैरी नहीं कर सकते. और प्रिवेंटिंग, सेविंग. And I'm afraid of hurting my back. I'd be in real trouble if that happened. They can give you advice about that, and also about how to avoid the possibility of your mum having a fall. Great. So, उसने प्रिवेंटिंग की जगह क्या वर्ड यूज किया था अभी? दे कैन अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ. अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ का मतलब यही होता है आप किसी चीज से बच रहे हैं. तो ये वर्ड रेफर कर रहा है प्रिवेंटिंग को. अवॉइड द पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल. नेक्स्ट, सिर्फ आगे कॉस्टिंग आ रही है. ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ, टाइप्स ऑफ सपोर्ट दैट मे बी ऑफर टू केयरर्स. यानी अब आपने उसको क्या देना है इन रिटर्न. once they've done this assessment, if I'm eligible, what happens next? Well, they might support you financially. So they might help you with transport costs, like if you have to get a taxi to take your mother for an appointment, for example. I usually drive her myself, actually. पहले का क्या आंसर है? ट्रांसपोर्ट में हेल्प करना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर उसको एक टैक्सी लेनी है, टैक्सी. कार रिलेटेड कॉस्ट, जिसमें फ्यूल मेंशन होगा ऑडियो में और एक वर्ड मिसिंग होगा. So, could I claim for the petrol? You could, and you can claim for the insurance too. Oh, फ्यूल की जगह उसमें वर्ड यूज किया पेट्रोल एंड इंश्योरेंस. बस, सेम सिंपल यही था ना. लास्ट तो किसी का नहीं रॉन्ग. नो. परफेक्ट. वॉज दैट डिफिकल्ट? शाहराम. यस मैम, ठीक है, मेरा भी इंश्योरेंस ही था। थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, अब आपने ये सारे सॉल्व करने होते हैं. ओके, इनोवेट पे आ जाएंगे. अब हम करेंगे एक और पार्ट 1. अभी हमने टेस्ट 2 किया है. मैं टेस्ट 1 का लिंक शेयर कर रही हूँ सबके साथ. आप सबने इसको अटेम्प्ट करना है. मैं मैम, ऑडियो, प्ले इधर होना है या आपने खुद प्ले करके करना है? आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं. मैं भी प्ले करके दे रही हूँ. अगर आप नहीं चाह रहे तो मैं सेपरेट, आप अपना सेपरेटली प्ले कर लें. चलें, ठीक है, ठीक। IELTS 20, published by Cambridge University Press and Assessment 2025. This recording is copyright. Test 1. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to part 1. Part 1. You will hear a woman asking a friend for restaurant recommendations. First, you have some time to look at questions 1 to 4. Now listen carefully and answer questions 1 to 4. I've been meaning to ask you for some advice about restaurants.
I need to book somewhere to celebrate my sister's 30th birthday, and I liked the sound of that place you went to for your mum's 50th. The Junction. Yeah, I'd definitely recommend that for a special occasion. We had a great time there. Everyone really enjoyed it. Where is it again? I can't remember. It's on Grayson Street, only about a 2-minute walk from the station. Oh, that's good. I'd prefer not to have to drive anywhere, but I don't want to have to walk too far either. Yes, the location's perfect, but that's not necessarily why I'd recommend it. The food's amazing. If you like fish, it's probably the best restaurant in town for that. It's always really fresh, and there are lots of interesting dishes to choose from. But all the food is good there. Is it really expensive? It's certainly not cheap, but for a special occasion, I think it's fine. It's got a great atmosphere, and before dinner you can go up on the roof and have a drink. It's really nice up there, but you need to book. It's very popular as the views are spectacular. Sounds good. So that's definitely a possibility then. Is there anywhere else you can think of? सेकंड का आंसर बताएंगे. रूफ. Spelling. It is quite expensive, and the roof is a very good place for the drink, but you have to book it something before because the view is very spectacular from there. Yes, spellings ROOF. Fine. If you want somewhere a bit less formal, then you could try Paloma. Where's that? I haven't heard of it. No, it's quite new. It's only been open a few months, but it's got a great reputation already. It's in a really beautiful old building on Bow Street. Oh, I think I know where you mean. Right beside the cinema. Yes, that's it. I've only been there a couple of times, but I was really impressed. The chef used to work at Don Felipe's, apparently. I was really sorry when that closed down. So is all the food they serve Spanish then? Yeah, you can get lots of small dishes to share, which always works really well if you're in a group. Worth thinking about. Yeah, there's a lively atmosphere, and the waiters are really friendly. The only thing is that you need to pay a £50 deposit to book a table. A lot of restaurants are doing that these days. I should have a look at the menu to check there's a good choice of vegetarian dishes. A couple of my friends have stopped eating meat. Not sure. I'd say the selection of those would be quite limited. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. फोर्थ का आंसर बताएंगे. रैशनल. सहर. Vegetarian. ओके. शाहराम. Vegetarian. अब ना यहाँ पे ये था कि वो जो गर्ल थी उसने एक पॉइंट रेज किया था कि डू यू थिंक देयर वुड बी गुड ऑप्शंस फॉर वेजिटेरियन बिकॉज माय सो मेनी फ्रेंड्स हैव कन्वर्टेड टू बी इन दैट. उसने कहा यस मुझे लगता है that a few options for vegetarian would be there, and so yes, vegetarian is the right answer. Spellings for vegetarian. Karen. VEGETA. This VEGAT. Yes, मैंने यही लिखे हैं. ठीक है, थोड़ा सा दोबारा देखें अपने स्पेलिंग्स को. बिस्मा. थर्ड का आंसर. स्पेनिश. आयुष. Spanish food, and it is a very good option for sharing because it's a small. Fine. First ka. Good for the people who are specially interested in fish. Okay. ठीक है.
मैं नेक्स्ट प्ले कर रही हूँ. अपने क्वेश्चन लुक एट क्वेश्चन नंबर 5 to 10. कहाँ पे है? Now listen and answer questions 5 to 10. I've just thought of another idea. Have you been to the Audley? No, don't think I've heard of it. How's it spelt? Audley. You must have heard of it. There's been a lot about it in the press. I don't tend to pay much attention to that kind of thing. So, where is it exactly? It's in that hotel near Baxter Bridge, on the top floor. Oh, the views would be incredible from up there. Yeah, I'd love to go. I can't think of the chef's name, but she was a judge on that TV cookery show recently. And she's written a couple of cookery books. Oh, Angela Frayne. That's the one. Anyway, it's had excellent reviews from all the newspapers. That would be a memorable place for a celebration. Definitely. Obviously, it's worth going there just for the view, but the food is supposed to be really special. She only likes cooking with local products, doesn't she? Yes. Everything at the restaurant has to be sourced within a short distance, and absolutely nothing flown in from abroad. I imagine it's really expensive, though. Well, you could go for the set lunch. That's quite reasonable for a top-class restaurant. £30 a head. In the evening, I think it'd be more like £50. At least that, I should think. But I'm sure everyone would enjoy it. It's not the kind of place you leave feeling hungry, though, is it? With tiny portions. No, the reviews I've read didn't mention that. I imagine they'd be average. Well, that's all great. Thanks so much. Okay. That is the end of part 1. You now सबमिट कर दें आंसर्स. फर्स्ट का फिफ्थ का क्या आंसर था? ऑडली. AUDLEY. At the top of फ्लोर के टॉप पे उन्होंने कुछ ब्रिज था. ब्रिज. यस नूर. फ्लोर का क्या टॉप होगा? फ्लोर किस चीज का था? It was he was talking about it's on the hotel top floor Yes. पे या At जहां the से hotel का व्यू मिलेगा. Something like that. All the reviews के spelling. REVIEWS. Yes. किसी ने न्यूज़पेपर लिखा है. उसने बोला था न्यूज़पेपर में जो रिव्यूज हैं वो सब बहुत अच्छे हैं. एंड व्हाट शी डज दिस. लोकल प्रोडक्ट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड लोकल. लंच की कॉस्ट 150 जो बाद में बोला था उसने. यस वो इवनिंग मैं में 50 बोला था बोली थी वो रात की. वो बाद में बोला था. वो डिस्ट्रैक्शन थी. वो अगर आपका यहाँ लिखा होता ना इवनिंग में लंच कॉस्ट पर हेड फिर आपने 50 करना था. अदरवाइज सेट लंच की जो कॉस्ट है वो 30 पर हेड है. और पोर्शंस प्रोबेबली ऑफ एवरेज इन साइज. एवरेज स्पेलिंग AVERAG. और इसके अलावा जो ऊपर आपने लिखे हैं वो सब ठीक है. वेजिटेरियन के स्पेलिंग आपके रॉन्ग थे. PEGETERIAN होते हैं. समझ आ गया? कितने ठीक है बिस्मा? मैं मेरे से बीच वाला ही गलत है. अगेन 9. शहर कम हो गए. 9 है लेकिन ये जो उसने स्पेल बोले थे उसमें
डी बोला था ऑडली AUDLEY डी डेल्टा ब्रिज लिखा होटल था यस इट वाज होटल गाइस पलवशा यस मैम। मैम मेरे स्पेलिंग मिस्टेक होते हैं इसलिए मैं सबमिट नहीं करती, अभी स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर रही हूँ, ये मेरी वीकनेस है। ओके शराम आपने हम्म। किया सॉल्व या नहीं किया मैम मेरे 6 ठीक हुए हैं। ओके दैट्स गुड फाइन दैट्स इट आज हमारा पार्ट 1 ही है लिसनिंग का हमारा शेयर फोकस इस वीक का लिसनिंग के पार्ट 1 का रहेगा ओवरऑल लिसनिंग में 4 पार्ट्स होते हैं ठीक है हम नेक्स्ट वीक नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें मोस्टली रैंडम क्वेश्चंस आते हैं और वो वेरी करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और मैप ठीक है जो भी आ जाएगा पार्ट 2 में वो हम करेंगे तो हम पार्ट वाइज इसको लेके चल रहे हैं आपने पार्ट 1 पे बहुत ज्यादा फोकस करना है अभी हमने कितने किए हैं सॉल्व हमने फर्स्ट 4 या फर्स्ट 3 किए हैं आपने मैंने ऑलरेडी गाइड कर दिया कि इनोवेट को किस तरह से यूज करना है आपने हर टेस्ट का सिर्फ पार्ट 1 करते जाना है बाकी सारे छोड़ दें अभी के लिए वंस आप मैम ये सारे टेस्ट कहानी जी मैम ये सारे टेस्ट ग्रुप के लिंक्स में अवेलेबल हैं। ग्रुप के जो डिस्क्रिप्शन है ना उसमें ये वेबसाइट मौजूद है इनोवेट के नाम से यस मैम। वो उसमें वेबसाइट पार्ट 1 हम सब करेंगे। यस उसमें से लिसनिंग निकाल के पार्ट 1 आपने करते जाने पार्ट 1 ना एक किक स्टार्ट भी होता है और वो आइस ब्रेक भी होता है वहां से आपका फ्लो अगर अच्छा बन गया ना तो अच्छा बन जाता है अगर आप कोई मिस कर जाते हैं आपके माइंड में वो चीज स्टक हो जाती है कि वो एक रह गया 2 रह गया और उससे आपकी बाकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है अगर आपने पार्ट 1 अच्छे से कर लिया तो पार्ट 4 आप समझे आपका हो गया सिर्फ उसमें आपको 30% एफर्ट मजीद लगानी पड़ती है तो पार्ट 1 इज दैट मच इम्पोर्टेंट मैम इसे लॉग इन कैसे करना है हमने, वो साइन इन जो भी है प्रैक्टिस के लिए? आप लोग को लॉग इन करने की जरूरत नहीं है पहली चीज सिर्फ इसको ओपन कर लो ये बगैर लॉगिन के ही हो जाती है innovate.com मैंने करके दिखाया है इसको लॉगिन सिर्फ तब करना पड़ता है जब आपने राइटिंग अटेम्प्ट करनी है यहाँ से लॉगिन होती है ये साइट से और मैंने अपना ईमेल भी दिया हुआ है वो डिस्क्रिप्शन खोल के देखोगे वहां ये ईमेल गिवन है ये ऐड करोगे और पासवर्ड भी गिवन है और लॉगिन करना है लेकिन लॉगिन किए बगैर भी लिसनिंग कर सकते हैं लॉगिन करना तब जरूरी होता है जब राइटिंग करेंगे तो जब राइटिंग करेंगे फिर आपको लॉगिन करना भी बताऊंगी मैम आज मिनिमम कितना टारगेट, हम कितने टेस्ट प्रैक्टिस करें आप एटलीस्ट पार्ट 1 के 5 लिए? जरूर करें विच मीन्स 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके ऐसे ही है 5 करें बाकी अभी आप यहीं बैठ के करेंगे मैं आपको नेक्स्ट लिंक शेयर कर रही हूँ जितने हमने कर लिए उनको रिपीट नहीं करना ठीक है हमने ये टेस्ट 21 तक कर लिए हैं इसको रिपीट नहीं करना आगे करना मैम हमने आज ज्वाइन किया, हम पिछले कर सकते हैं फिर? नहीं हमने शुरू ही पीछे से हमने स्टार्ट से सिर्फ एक ये वाला नहीं किया कैम्ब्रिज आइल्स 20 वाला ये वाला ये कर लेते हैं अभी इसका लिंक शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ नूर मैं आपको इस ग्रुप से रिमूव कर रही हूँ दूसरे ग्रुप में ऐड कर रही हूँ आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया करने हैं आपसे ओके मैम Test 4. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings, and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions, and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in 4 parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes
to transfer your answers to an answer sheet. Now turn to Part 1. Part 1. You will hear a man asking a friend for advice on things to do in the city with a family of visitors. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Sandra, I seem to remember you had some family visitors staying with you recently. Yeah, that's right. My brother and his family were here a couple of months ago. Okay, good. Well, I wanted to ask your advice. I've got my cousin and her family visiting next month, and as I don't have kids, I've no idea where to take them. Right. What about accommodation? Are they going to stay with you in your flat? No, thankfully. There wouldn't be room. My cousin wants me to recommend a hotel. Do you know anywhere? Yes, I do actually. I always recommend people stay at the King's Hotel. Where's that near? It's about 5 minutes walk from Murray Station, so nice and central. It's actually on George Street. Oh, yes, I know. I think they're on quite a tight budget, so how much roughly is it to stay there? If you book a family room, it's about £125 per night. My brother paid for 2 double rooms in the end, and I think that was around £95 for each room. Oh, that's not too bad. So how old are your cousin's kids? 12 and 9. So I want to organise some trips while they're here. I was thinking of doing a bus tour of the city centre, as none of them have been here before. Those bus tours are quite expensive. I think it's better to do a walking tour. It gives you a much better feel for the city. There's one that starts from Colton Square. It takes a couple of hours and doesn't cost that much. Sounds good. I'll look that up, thanks. If the weather's nice, one thing you could do is visit the old fort. You could get there by boat. The whole trip takes half a day. That's a really good idea. I'd like to do that myself. And if the weather's bad, I was thinking they could go to the Science Museum. But maybe they could do that when I'm at work. Yeah, don't forget, it's closed on Mondays. They're here from Saturday for 4 nights, so Tuesday would be best, I think. And it won't be so crowded then. Saturdays are terrible. I took my kids to the exhibition on old computers there, and it was far too crowded. I wanted to go back, but it's finished now. That's a shame. My cousin's kids would have enjoyed that. There's another one starting soon on space, which looks really good too. Okay, well, I'll mention that to my cousin. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Have you thought about where to take them to eat? Well, I really like all the food stalls at Clacton Market. My cousin's vegetarian. I know it's one of the best places for that kind of food. Definitely, and there'll be loads of choice for the kids too. You need to get there quite early though. At the weekend, most of the stores stop serving lunch at 2:30. Good point. It's all going to need careful planning. My cousin said she'd love to take the kids to a show at the theatre, but tickets are so expensive. I know, but you can get some good deals if you book online with bargaintickets.com for the following day. On some seats, there's a 75% discount. Really? I must try and get some. Yeah. There are lots of things you can do for free as well.
No need to spend a fortune. Like what? They're coming next month, right? Hmm? Well, check and see if it's the same weekend as the Roots Music Festival in Blakewell Gardens. ROOTS. Yeah, check it out online. It's always a family-friendly event, and there's no entry charge. That sounds perfect. And if you're in Blakewell Gardens, climb Telegraph Hill. You'll be able to look right down on the port. Everyone's always really impressed because it's so huge. Oh yeah, I've been meaning to do that for ages. I've heard the view's amazing. Yeah, it's really worth the effort. Well, that's given me loads of 10th का क्या आंसर है? Port. You will be able to look at the. Okay, fine. Submit your answers. Nine. Bad. Seher. Palvasha. मैम मैं कर रही हूँ अभी। Ram. Alina. 9. Good. मैम मेरे 8 ठीक हुए, Very good. एंड वाले की समझ ही नहीं आई जो एंड वाले का से यू कैन सेव अप टू 75%। ठीक है। और लास्ट पे उसने कहा था क्लाइंब टेलीग्राफ है एंड फ्रॉम देयर यू 10th वाला एट द फोर्ट FO किला, जो ऊपर किले की बात चल रही है। पोर्ट। अच्छा, पोर्ट, फोर्ट नहीं, पोर्ट। पोर्ट guys, it's a port. Our students are saying it's port, not fort. और कौन सा रॉन्ग हुआ है किसी का? अच्छा, 8th का क्या मार्क किया सबने? सबका ठीक है? 230 मार्क किया। एक ही तो टाइम उसने बताया था सारे में कि आप नाइट में जो है वो क्लोज जल्दी हो जाता है, इसीलिए 230 पे चले जाना। एक ही तो टाइम उसने बताया था और एक ही जगह आपने टाइम लिखना था। ठीक है। इसके अलावा 7th वाला, ये अभी हम रिसेंटली, यस इट वाज वेजिटेरियन। एंड बेस्ट डे टू विजिट ट्यूसडे, यस दैट्स इट। बाकी मैंने इतनी सुनी नहीं है गौर से। कौन सा रॉन्ग हुआ है कोई जो डिस्कस करना चाह रहे हो? थर्ड हुआ है। उसने बस के बाद वॉकिंग की बात की थी, लेकिन a bus tour of the city center, तो वो उसमें लड़की ने बोला था कि नहीं हम आगे स्टार्ट्स एंड, ठीक है। ओके, परफेक्ट, गुड जॉब। सर आपके कितने राइट है? 9। गुड। That's it, guys. That's it for part 1 of listening. IELTS listening test बहुत सिंपल है, बस आप अच्छे से सुनोगे तो आप अच्छे से मार्क कर सकते हो। That's it. आपके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए, कुछ प्रिडिक्शंस